In this video, we will try to learn about dependency inversion principle. ये solid का last principle है, and this principle, if we follow it, this can make our code loosely coupled, scalable, maintainable. Because इसके जो rules हैं, they force you to write good code. In fact, it encompasses all the other principles. तो अगर आप ये principle follow करोगे, तो आपका पूरा code ही maintainable और loosely coupled हो जाएगा. Now let's just look at the definition first, and then we'll try to understand. Okay, so what does the definition says? DIP कहता है कि जो हायर लेवल मॉड्यूल्स होते हैं, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन लोअर लेवल मॉड्यूल्स, एंड बोथ ऑफ देम शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस. नाउ दिस साउंड्स कॉम्प्लेक्स, बट इसका मीनिंग काफ़ी सिंपल है. This means, firstly, the higher level modules, low level modules, what are these? So high level modules basically means the classes or the modules where there is business logic. Right now we are not talking about technical details. ये वो क्लासेस हैं जो बिजनेस लॉजिक कंटेन करती हैं. टेक्निकल डिटेल्स का एग्जांपल क्या होता है? जैसे डीबी कनेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन बनाना, राइट, कनेक्शन पूल कॉन्फ़िगर करना, ये सब चीज़ें. बट बिजनेस लॉजिक इज योर एक्चुअल लॉजिक, राइट. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस करने के जो जो चीज़ें आपको करनी है, वैलिडेशंस करना है, राइट, एंड यू हैव टू डू ऑल द अदर थिंग्स. सो ऑल द ऑपरेशंस, ऑल द बिजनेस फ्लोज, दैट इज योर हाई लेवल मॉड्यूल्स. सो दीज मॉड्यूल्स, ये जो बिजनेस लॉजिक है, दे शुड बी फ्री फ्रॉम लोअर लेवल डिटेल्स, और वी विल से इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. खासकर ये जो टेक्निकल वाले पार्ट रहते हैं, so they should not depend on the concrete implementations, and they should be free from these frameworks, if we can say. The idea is the logic, the main business logic, domain logic should be free from any framework. They should be free from those kind of details. And how we can make them free? We can make them free by making them dependent on interfaces, and not to concrete implementations. Let's just write the definition in simpler words, and then we'll see the coding example. Okay, so I'll just write the first statement saying high level modules should not directly depend on low level modules. Pehla part. What is the second part? They should depend on abstractions. That is the main goal. ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, abstractions. There is one more simpler definition which we can take as a rule from this chapter, which is classes should depend on interfaces and not on concrete implementations. Cool. ये है डेफिनेशन. नाउ एक हम लोग कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं, एंड देन विल आल्सो डू द सेम कोड इन द आईडी. बट पहले एक बार वाइट बोर्ड में समझ लेते हैं. So consider a scenario जहाँ पे so in e-commerce what happens whenever you place an order, whenever you buy something, you get notifications, right? You generally get these invoices in your emails about the order details, and these days you also get the same details on WhatsApp, correct? So imagine there is a class जिसका नाम है order processor. ठीक है, ऐसा एक क्लास है, और उसके अंदर एक मेथड है विच इज, लेट मी जस्ट राइट पब्लिक वॉइड प्रोसेस ऑर्डर. ऐसा कुछ मैसेज है, और उसको ना ऑर्डर आईडी मिलता है. ठीक, तो जब ऑर्डर आईडी मिलता है प्लेस ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर में, तो वो क्या करता है? वो कुछ इट वैलिडेट्स, है ना, देन अपडेट्स अपडेट्स वेयर हाउस, मतलब क्वांटिटी कम करेगा, सेलर को नोटिफाई करेगा, वेयर हाउस में उसका कुछ टिकट बना लेगा, एंड एट द एंड व्हाट विल डू इज इट विल नोटिफाई द कस्टमर. तो ये नोटिफाई करने के लिए इमेजिन करो कि आप यूज कर रहे हो ईमेल. तो आपने क्या किया? यू हैव अ डिफरेंट क्लास
I'm creating that class here. It's called email provider. ओके, और उसके अंदर मेथड है सेंड ईमेल. उसमें आप ईमेल कंटेंट और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, एंड उसके अंदर पूरा कोड लिखा है, राइट, टू सेंड द ईमेल. सो व्हाट यू विल डू इज you will have this email provider, email provider, and you will create the object new email provider, and here in this method you will just call that, right, you will say email provider dot send email. अब as per dependency inversion this is wrong. आपका जो order processor है, this is a high level module, this is a high level class which is basically dealing with business logic. There's validation, there's other things, and in the end there's also this notifying thing. बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ये ऑर्डर प्रोसेसर है, इट इज डिपेंडिंग ऑन अ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन. नाउ दिस क्रिएट्स इशू. एंड व्हाट आर दोज इश्यूज? Like before moving to interfaces, let's just understand how it helps, like moving to interfaces, right? So I'll tell you the issues first. What are the issues? The first issue is difficult to change. This is the main part. So if you want to have a different mode of communication, for example, now you want to do WhatsApp and you don't want to use email. Now that is difficult. Why? Because your class depends on a concrete implementation. So eventually what you will have to do is you will have to delete this thing, right? You will have to delete this email provider implementation from here. Then you will have to create one more implement, like you have to create another class for this SMS or WhatsApp, and then you will have to come here and you will have to create the dependency for it, and then you also update this. Now there can be an argument regarding ki what's wrong with that, and it's fine to change, but changing or modifying existing code, right, always comes with risk, and it opens a point of heavy regression. क्यों? क्योंकि whenever you modify an existing working piece of code, there is high risk that you will leak some bugs, and it can go to it can go live, and इसका बहुत बड़ा impact हो सकता है. And the other thing is, whenever you are updating something, then you have to do heavy regression, right, so that you are sure that okay, the existing things work correctly. But the point is that it becomes a pain, right? So first point is difficult to change. The other point is it also makes it very coupled, right? So your order processor is very hardly coupled with this email provider, and I think, or as per solids, order processor should not care, right, like what is the channel. But here it knows that okay, it's an email provider and it is dependent on it. So even later if you have to imagine you're switching your email provider, and that email provider requires some extra things to for their initialization, then even that construction part, right, that creation part, you'll have to come and you'll have to update this, because now it expects some parameter for it to get initialized. So see, this is very hardly coupled. Ideally you are only supposed to do changes in the email provider, but you'll have to come even in the order processor and do the changes, and you'll also have to do the changes to all the places where this email provider is being used, correct? So this is very hardly coupled. The idea is that it's which is basically opposite of loosely coupled. Okay. And the third thing is, which people don't give much importance to, but it's extremely important, which is testing. Testings become very hard, and this testing is basically unit test. So it becomes very hard to mock when you are using the concrete implementation and you are initializing like this, right? And you may end up, using some test DB for you to execute test, because you cannot mock this. It's very hard to mock. Of course there are frameworks that can help, but it's not a good position to mock it. So these are the issues. Now the solution. So the solution for solving this, right, is, let me just write first solution. It's very simple, and there are 3 steps to it, and we can follow, and we can just learn these three rules, and
We can you basically change the structure of a code, and it will become very I can say maintainable. The first point, create abstraction. Create abstraction. So what like but abstraction of what, right? So create abstraction of the dependency, of the dependency. मतलब क्लास किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे वो ईमेल प्रोवाइडर पे डिपेंड कर रही थी. Excuse me. Yeah. So the first point, create abstraction of the dependency. The second point, create implementations of the same. भाई जो भी आपने एब्स्ट्रैक्शन बनाया, इंटरफेस बनाया, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन देना है, या जितने भी आपके पास पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन है, यू हैव टू गिव. एंड द थर्ड पॉइंट इज यूज, और आई विल से रिप्लेस, हाँ, रिप्लेस द कॉन्क्रीट IMPL with interfaces in the high level module. ये 3 स्टेप हैं बस. ये 3 स्टेप करोगे आपका डिपेंडेंसी इन्वर्जन हो गया. नाउ हमारा जो इसके ऊपर जो एग्जांपल है, we'll try to code the same. First we will write the code that violates DIP, and then we'll fix it. So let's move to the ID now. Okay. So we can see we have this dependency inversion demo. सबसे पहला पार्ट क्या था कि हमारा जो, लेट्स क्रिएट एन हाई लेवल मॉड्यूल फर्स्ट. हमारे हाई लेवल मॉड्यूल का नाम हम लोग रख लेते हैं क्लास ऑर्डर प्रोसेसर. सिंपल, ठीक है. और उसके अंदर एक मेथड दे देते हैं पब्लिक वॉइड प्रोसेस ऑर्डर. प्रोसेस ऑर्डर वो ले लेगा ऑर्डर आईडी. वी आर राइटिंग अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन. एंड यहाँ पे क्या करना है, वी आर simulating some validation. So I'll write okay, validating the order, है ना, then updating the warehouse, है ना, count या quantity. ये this is basically business logic. And the last thing is जो हमको करना है after we are done with the business logic is notify the customer, right? Like send email. अब ये सेंड ईमेल के लिए हम लोगों ने क्या सोचा था कि करंटली हमारे पास एक क्लास थी, राइट, जो ईमेल सेंड करती है. क्या नाम था उसका? विल से ईमेल प्रोवाइडर या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, वी कैन हैव एनी नेम. और उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड सेंड ईमेल. अब वो लेगा आपका ईमेल आईडी एंड इट विल टेक स्ट्रिंग कंटेंट. ओके. And it is doing something. I'll just write ki sending email to customer, and let's just write the email that we are getting. Okay. ये basically it's ये एक सूडो कोड हो गया for sending an email. And इस सर्विस पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं. कौन डिपेंड कर रहा है? ये जो हाई लेवल मॉड्यूल है जो कि ऑर्डर प्रोसेसर है. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बना के उसका ये मेथड एक्सेस करना है. सो विल जस्ट क्रिएट द डिपेंडेंसी हियर. नाउ दिस इज नॉट गुड कोड, दिस इज अ कोड दैट इज वायलेटिंग. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. सो ये किया एंड वी ऑल्सो डिड दिस. ठीक, उसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया. And now the instance variable is available to us inside this method. We'll just say email service provider dot send email, है ना, कस्टमर का ईमेल और ऑर्डर प्रोसेस सक्सेसफुली. ये हमारा फ्लो हो गया. लेट जस्ट ऑल्सो वेरीफाई द सेम. हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं. यू कैन सी दैट वी क्रिएटेड अ प्रोसेसर, और बस प्रोसेस ऑर्डर कॉल किया एंड उससे let's see what is the output. It should probably say sending email to the customer. Okay, yeah, we got the prompt right here. Let's just add one more statement so that
जब बाद में रन करेंगे तो it will help us understand. I'll say validating the order and updating the warehouse. Cool. Let's run again. Cool. This is working. Now let's fix and make it DIP compliant, or we can even say making it scalable and a clean code. तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड कर गया है ना. तो हम लोग अपने 3 स्टेप्स याद करते हैं. पहला स्टेप था क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डिपेंडेंसी. सेकंड स्टेप वाज create the implementation and then replace the concrete implementation with the interface. So step 1 is what? Create interface or abstraction for the dependency. Now you tell me, what is the dependency here? Dependency here is about email, is about notifying the customer, and right now we are doing send email. So one possible solution for this could have been this. So if I had create interface, we could have gone with like this. So we could have created an interface email service and had a method send email. Okay, okay, let me write email notifier. I think, yeah, an interface called email notifier, and it has this send. Now this is not wrong. One way of doing it can be this, but there's one more thing that we are missing here. We are not thinking about the second principle, open for extension and close for modification. Why? So tomorrow if you have to support SMS, there this email notifier cannot help, right? And for that, what you will do is you will create one more interface. And it will say SMS notifier, correct? And SMS notifier, and it can have the send SMS method, and then we'll have to also use this interface here, right? So we could go like that. That is also a way. But the simpler way would be, it is not even let us remove this knowledge of what type of notification we are sending from the order processor. We can remove that, and rather we can just say a notifier. We can let's just depend on the notifier interface itself. So a better solution would have been creating an interface which says notifier. बस एक सिंपल इंटरफेस बनाएंगे जिसका 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 नाम है नोटिफायर, और उसके अंदर एक मेथड होगा void notify. There is no mention of what channel it is, nothing. It only takes order ID for this example. Okay, तो ये एक हमने एब्स्ट्रैक्शन बना दिया. Now we have to implement the abstraction based on the dependency. हमारा dependency क्या था? email service, email वाला था, right? This was the concrete implementation ना. इसको हम लोग इस interface का implementation बना देंगे. कैसे बना देंगे? Let's create class email notifier, right? Implements notifier, और यहाँ पे हम उसको implementation देना पड़ेगा उसका. Let's just implement the method. Okay. We have overridden the notify method, and let me just copy the older code that we wrote. Yep. हाँ, we'll get that. And अब यहाँ पे तो let me write this, but हाँ, इसके अंदर कुछ और भी लॉजिक रहता है, जैसे to from the order get the customer email, right? And other details and we can just assume कि ये जो email है, this is that customer email, and we'll just write the email. Cool. So we have done the second step also. Now what is the third step? That third step is replace the concrete implementation from the high level module. So here where is the concrete implementation? This is the concrete implementation. इसको replace किससे करना है? We have to replace this with abstraction. That was the third point. So what we'll do is we'll remove this and we'll say private notifier, right? And let me write this also, new email notifier. And here we'll say, instead of, and we'll have to update the code, right? Like now we have to use this notifier instance,
So we'll say notify dot, will we call send email? No, we'll just call notify, and we'll say, we'll just send the customer email or the order ID. We'll not send this, we'll just say order ID, yeah, based on the new contract. ठीक है. Now ये हमने DIP कर दिया. There is still one part left, but मोटा मोटा दिस इज द एंटायर थिंग. आपने नोटिफायर इंटरफेस यूज कर लिया, आपका जो कोड है वो इंटरफेस ड्रिवन है. But one can come and say, no, it's not. It is still using a concrete implementation, which is fine. मतलब concrete implementation तो use आपको करना ही पड़ेगा, but the code is still using interface. But यहाँ पे फिर भी there is a hard coupling. Why? We have basically added an implementation where you will always use email notifier. So this even this usage of interface is not helping. आप यहाँ पे हार्डली कपल्ड हो गए हैं फॉर यूजिंग ईमेल नोटिफायर. एंड द अदर थिंग इज यू आर स्टिल डूइंग दिस डिपेंडेंसी क्रिएशन थिंग विच वाज नॉट योर जॉब. ये आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी वायलेट कर रहा है. दिस इज नॉट योर जॉब टू क्रिएट दिस डिपेंडेंसी फॉर यू. करेक्ट. तो इसका सोल्यूशन क्या है? विल जस्ट रिमूव दिस. ओके. एंड विल एक्सपेक्ट द डिपेंडेंसी टू बी सेंट टू दिस क्लास वाया कंस्ट्रक्टर. ये सिंपल. सो whatever implementation we are given when somebody is constructing order processor, that implementation will use and will put it will assign this to the instance variable inside. Okay, and that will get used. अब ये DIP भी हो गया, यहाँ पे inversion of control भी हो गया. You are not creating your dependencies, you will just use whatever is being sent to you. And now this is a complete DIP compliant code. एक बार let's update the demo also. See now here it is giving error because now it needs one argument which is what, which is basically the notifier. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक email notifier बना लेंगे. So we are creating this email notifier and we'll just send that email notifier instance here. It isn't working. Execute करते हैं. It worked. Sending email to the customer, सब चल रहा है. Now there is one more important thing जो हम लोगों ने DIP का यूज भी पढ़ा था, कि इससे एक्सटेंशन भी हो रहा है और आप लूज कपलिंग भी अचीव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि टुमारो इफ यू कम विद अ डिफरेंट लेट्स से डिफरेंट नोटिफायर लाइक SMS और WhatsApp नोटिफायर, आप यूज कर सकते हो विदाउट अपडेटिंग एनीथिंग इन दिस ऑर्डर प्रोसेसर. सो यू व्हाट यू हैव डन इज, इफ यू हैव दिस कोड, अगर आपको नया चैनल भी इंट्रोड्यूस करना है, यू डोंट हैव टू अपडेट और मॉडिफाई दिस पीस ऑफ कोड. इससे क्या हो गया? इसके आप बग्स नहीं आएंगे, आपको ने कोड जज नहीं करा, एंड बेसिकली यू आर नॉट वायलेटिंग एनी प्रिंसिपल. एंड लेट्स ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैट. क्या करना है? हमको SMS भेजना है, राइट? विल जस्ट से क्लास SMS notifier, and which interface would it implement? It will implement the notifier interface. उसको मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, एक पब्लिक void what is the method? Notify. Correct. Let me also write override, and I will say simple statement डालते हैं, sending SMS for order ID, and we'll just print the order ID. ठीक है. एक और हम लोगों ने implementation बना दिया है यहाँ पे SMS notifier का. Now अगर हमको switch करना है अब हमको if you have to swap the implementation, right, like हमको अभी email use नहीं करना, अब हमको SMS use करना है. I will not update anything in the order processor. I'll just do one thing. I'll send that dependency, SMS notifier dependency. So SMS notifier in place of the email notifier. यहाँ पे will update to send SMS notifier. And if I execute the code, see, validating the user, updating the variables, your business logic remained untouched. We haven't changed anything there. But now we have switched back. We have moved to SMS and not used email. So this is dependency inversion principle. I hope you have understood this. It's one of the important one to follow. और अगर इसको follow करोगे तो code already आपका maintainable और scalable भी हो जाएगा. Thank you.